to extend my heartiest welcome to our speaker, Dr. Sanjeev S. Patil, sir. Sir, we are really happy to see you here on the board and delivering a session on coaching, officiating, and general principle. Participants, let me take this opportunity to introduce our speaker. Sir is working as an assistant professor in Sai LNCPE. Sir is my colleague as well. And sir, when we talk about the educational qualification, so sir has done PhD in physical education, MPhil, MSc in yoga, diploma in judo, and qualified KSET exam. Sir has 3 years working experience in Jain International Residential School as a physical education teacher in Kanakpura, 2002-2005. Sir also worked 12 years in government high school, Harpanhalli, Karnataka. Sir is currently working in Sai LNCP from past 4 years. When we talk about the awards, Sir has been awarded Best Teacher Award in 2017-18, District Award by Education Department, DDPI for primary and secondary education. Sir has been awarded second rank by Kubempu University in November 2015. Sir has presented and published more than 22 articles in international and national journals and published 2 books, Effect of Selected Yogasanas on Physical Components of School Children. Sir has proceeding of edited and reviewing the committee member of proceeding of National Conference on Yoga and chairperson in research conferences and seminars. So, ladies and gentlemen, without taking further much time, I would like to take this opportunity to invite our speaker for the session, Dr. Sanjeev S. Patil, sir, for the session. And one more thing I would like to input here, sir was a national level judo player and sir won medal at national level and inter-university all India level as well. So we have very energetic and eminent speaker with us. So sir, before you start, I would extend my welcome to all the lovely participants, those who are with us from the beginning of this program. So once again, I welcome and over to you, sir. Thank you very much, sir. It's a privilege for me to be here on this occasion. All over India, this is one of the best program successfully running all over India here. During pandemic also, and now also, this program is really supportive for all the teachers, especially the physical education teachers. So it's a proudful moment for me to be here and to present this beautiful topic. So with your permissions, I'm going to share and present this topic. I hope this is very clear for you people, participants. So is it clear? Yes, sir. You may please continue. Participants, today's topic is community officiating and general principles. So first of all, we have to think about sports here and games. In this sports and games, players will be there and their participation is very important in that. As a support you, even coaches will be there, whole administration, organizations will be there, and even for the entertainment or to cheer the participants, even audience will be there, even press media will be there. So all these people are very important for the success of this officiating part of sports and games. Apart from that also, one more important thing what we are forgetting is that officiating and officials. Officials are the souls and they are equal to an almighty as the person who is absolutely a neutral person and try to be positive towards the game, and absolutely he is preventing a lot of biases here.
and he is the person who starts the game, and he is the person who ends the game, who is the person who declares the results. So his presence is most valuable here. Without him, the game will not start or game will not end here. Even results are declared by him. It is the one, he is the one who is who has a right to declare the results of this competitions here. And in the competition, he is the person who no one dares to him. So he is the final authority to take and implement the rules and regulations here. So that's why it is very important for us here today. Today we'll try to understand what sort of officials we are expecting, and what sort of duties and responsibilities will be there for him, and attitude and quality of an official, how it should be, that we are going to discuss here. Here you can see here in the second slide, the purpose of sports for many is to win, but we need to refine the manner that which this objective is achieved is also very important here. Please understand that this everyone, the player or a country or an organization, try to win this competitions here, but the manner, the tools which they apply, that is very important here. Like manner means like whether in a right manner or in other means, like by misutilizing, manipulating the rules and regulations as for their benefits, and manipulating the public audience or coaches, or sometimes using a prohibited substances, especially like drugs. So these are the other means one can win the medal here. But what we are expecting is the manner. As a human being, as a sportsman, what sort of a manner you are going to opt to win the competition. So for that, you have to understand the Olympic motto also here. It is very clear that Olympic is there for humanity here. It is only you are going to show their abilities, and participation is very, very important in all those sports and games here. So this is the main motto. If a country or a player understand this one, then definitely they will opt a right manner to win the competitions here. So here a small video you can expect here. Diego Maradona, a famous football player, a beautiful incident is there on this, which is an unforgettable one. Hand of a God goal. This is a very popular event. So in this, you can see that how the players are manipulating the rules and regulations, and how even sometimes officials fail to. The wide men have found little space in this contest. It's not true of Olatiko-Chair at the moment, but certainly it's been true of the England team. Haven't seen that much of Hodge or Trevor Stephen. Maradona just walked away from Hoddle then. Valdano, Hodge and Maradona! They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge, and Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. But the little man who started it by walking past Glenn Hoddle, that's where the ball came from Hodge. Maradona had continued the run forward, and the goal is given. At what point was he offside? Or was it a use of the hand that England are complaining about?
So you have observed this a small video. In this video, you can see Maradona's actions over that ball. It is not clear for an official. So finally, the decision was given in favor of Maradona. But here, some of arguments were there that he has utilized his hand also. So that was the argument here. Even in the video also, it is very clear that. So what sort of actions were done here? But there are two things here. One is officials fail to identify it because they are humans. Every small incident, it's very difficult sometimes to identify these minute things also. One thing, and another point is that the manner which one is utilized by a player, that is also important here. Whether Maradona was at a right place, whether he has utilized a right manner to make a goal, that counts a lot here. So maybe his words were silent, but during the press time also, उन्होंने ये बोला कि the hands of God it is. So ये बोल नहीं सकते कि उसने क्यों ऐसा बोला कि, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता कि even he has to play for the nation. Sometimes what happens, lot of audience pressure will be there. Because of that reasons, he may not have told that the manner how he had made a goal here. But finally from video, it is very clear it is. So somewhere he was mum about his actions also here. But being a player, he has done that one. But being officials, what will be the duty of an official? So being an official, he should be very thorough about the rules and regulation. One point here, and never try to give a decision by saying these subjects here. Objective decisions are very important than the a subjective one. By seeing a Maradona's famous things, famous goals or famous performance, one might have given such decisions also that maybe what he has done is true. It is by actions. It says that yes, he has done something right one, but still, even players may go out of rules and regulations. They may not follow the ethics of these sports also. So during such times, officials must be more alert compared to these audience or other administrative things here. If officials are very alert about that, definitely mistakes will be reduced here. An important point what I want to stress here is that give priority for the objectivity than the subjectivity here. So that is the important message which I like to give on this video here. And officiating here. So officiating. Sir, would you please mind? Yeah, sorry to please. Sir, participants बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, अगर सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा. थैंक यू. ठीक है, मेरा हिंदी बहुत बुरा है, फिर भी लेट मी ट्राई इट. ओके. Officiating it is. So here are 3 points you have to keep in your mind here. Why, how, and who it is. क्यों officiating चाहिए, like why it is. क्यों officiating आपको जरूरत है, तो इसके लिए for the success of sports and games competition, all competitors should have equal opportunities. इतना ही कि सभी को equality मिलना चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए, और in time competition शुरू करने के लिए, in time competitions को complete करने के लिए, और सही आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको ऑफिशिएटिंग का जरूरत है फॉर द सक्सेस आल्सो. अगर एक खेल खत्म फिनिश होना है, तो कंप्लीट होना है, तो ऑफिशियल के बिना नहीं हो सकता. इसलिए ऑफिशिएटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाउ इट इज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. आप कैसा रूल्स एंड मतलब हाउ मतलब आप कैसा इसको ऑफिशिएटिंग करोगे, इतना ही बस सिंपल. आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करना है, इसका बहुत जरूरत है.
और इसको सही टाइम पे आप इम्प्लीमेंट भी करना है गेम्स में, और उसको आप सुपरवाइज भी करना है। अगर बाई चांस कहीं गलती है तो आप फर्दर एक्शंस या फर्दर एडवाइस, फर्दर सजेशंस के लिए आप जा सकते हो। इसलिए सुपरविजन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सही टाइम पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कंपटीशन होने के बाद अप्लाई किया तो, या सिचुएशंस होने के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन टाइम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। this is concerned with an how here. And who is that? Who is the official here? To be supervised by a supervisor called as an official here. And इनका अलग अलग नाम भी है ऑफिशियल्स का। रेफरीज भी हो सकते हैं, अंपायर भी हो सकते हैं, जजेस भी हो सकते हैं। ये सभी क्या है? ऑफिशियल्स है। ऑफिशियल्स क्या करते हैं? ऑफिशियल्स सुपरवाइज भी करते हैं और ऑफिशियल सुपरवाइज्ड भी रहते हैं। मतलब कोई उनको ऑब्जर्व भी करता है और ऑफिशियल भी ऑब्जर्व भी करते हैं। एंड दीज आर द पीपल हु आर न्यूट्रल, एब्सोल्युटली दे आर वेरी पावरफुल। बहुत ताकतवर भी रहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, और दे आर वेरी न्यूट्रल हियर। किसी को वो लोग फेवर नहीं करते, वो लोग एब्सोल्युटली दे आर अगेंस्ट टू द बायस थिंग्स हियर। And they are the one, I have said that they are equivalent to Almighty, where he will not differentiate anyone. By seeing the objectivities, by seeing the situations, he will give the decisions not on the basis of an A subject here. So that is an official here. Next, success of officiating. एक official कैसा success हो सकता है अपना कैरियर में? One thing is that rules and regulations. Rules and regulations को हर एक टाइम पे अपडेट करना है। कंपटीशन से पहले उसको जो मैनुअल्स हैं, करंट मैनुअल्स, उसको पढ़ना चाहिए, उनको डिस्कशंस भी करना चाहिए उसके ऊपर बिफोर दी कॉम्पिटिशंस। मैकेनिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक पार्ट है। मैकेनिक्स, ये जो कॉम्पिटिशंस एंड गेम्स हैं वो कैसा चलता है, दैट इज कंसर्न विद एन मैकेनिक्स हियर। मतलब कितना देर तक चलता है। और एग्जांपल फुटबॉल हो गया तो फर्स्ट हाफ कैसा चलता है, सेकेंड हाफ कैसा चलता है, फर्स्ट हाफ में बिहेवियर कैसा रहता है प्लेयर्स का, और सेकेंड हाफ में कैसा बिहेवियर्स रहता है, कौन सा रिक्वायरमेंट रहता है, कैसा इंटेंसिटी रहता है। ये सभी कंसर्न टू एन ए गेम हियर। वही और एक मैकेनिक्स है कंसर्न टू योर इक्विपमेंट्स। बीइंग एन ऑफिशियल, वन मस्ट बी वेरी थरो with concern with an equipments, how an equipment functions here. Like example, take athletics here, quality of a javelin or a discus or a shot put here, how it functions, whether the frame of an equipment, is it in a right posture, especially the aerodynamics, whether as per the science it is made or as per the game rules and regulations equipments are there or what. They have to be very thorough about those things also. Even दूसरे गेम्स में भी हो सकता है, जैसे फुटबॉल में बॉल का साइज हो गया, शेप हो गया, क्वालिटी ऑफ एन ए बॉल हो गया। इवन इन क्रिकेट आल्सो इट इज quality of a bat here, size of a bat, stump or a ball, sort of a ball, whether it is a correct ball or a leather ball, or now modern balls are coming like kookaburra. They have to be very familiar with the mechanics of these tools also, equipments which they are going to use it here. And उसके बाद भी players को important physically fit होना है। जब फिजिकली फिट है वो सिचुएशन के पास रह सकते हैं, फिट नहीं है तो सिचुएशन के पास नहीं रह सकते। आप पास में हैं सिचुएशन के पास तो आप सही डिसीजंस दोगे। सही डिसीजंस लेने के लिए आपको वो सिचुएशन के पास होना चाहिए, और वो वहां होने के लिए आपको बहुत फिट होना है। एग्जाम्पल फुटबॉल, दे हैव टू रन,
same like a players. It is not like a badminton somewhere, the table tennis where they sit here and take additions. But football, a bigger area it is. So they have to move from one place to another place. They have to shift and they have to be at a particular positions to give the decisions. So that's why physical fitness is very important for the players here. Trained and certified experienced officials should be there here. एक ऑफिशियल होने के लिए उनको एक ट्रेनिंग भी चाहिए, साथ में रिकॉग्निशन चाहिए. कैसा मिलेगा? कोर्स होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है. दैट इटसेल्फ it is helpful in recognizing also here. So certificate चाहिए, साथ में you need a good experience here. आपने कोई कोर्स कर लिया, फिर बाद में आप सालों तक वैसे ही रहे, फिर आप फिर से ऑफिशिएटिंग में आना चाहते हैं तो आपसे बहुत सारे गलती होगा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स भी चेंज रहता है. जो सीखा आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करना है बार बार, तभी आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा उधर. तो इसलिए आप चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए. एक्सपीरियंस ये मतलब नहीं बस आप नेशनल्स में या इंटरनेशनल्स में पार्टिसिपेट करना, नहीं. आप लोकल कॉम्पिटिशन्स में एज ए ऑफिशियल्स आप पार्टिसिपेट करो, सही रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी इम्प्लीमेंट करो आप, तभी आपको क्या मिलता है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है. वही एक्सपीरियंस से और वन बाय वन स्टेप आप क्रॉस करके you can reach up to in a top level here. Experiences are very important equipments which saves an officials during the competitions. And communication is very important here. आप कोई भी लैंग्वेज का हो, पर एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स लैंग्वेज है, उसको आपको सीखना ही पड़ेगा. In every competition, in every game, there is a unique rules and regulations, unique language is utilized here. So that must be familiar for the officials here. He should communicate with the same language which is utilized universally in that competition. Maybe on combat games like Asians, they are using their own languages. When it goes to Chinese, Japanese, in their games, they utilize their own languages, Chinese and Japanese, Koreans. When you go to European countries, the games which were introduced by them, absolutely they use English or French here. But you are not very familiar with the English, French or in a Japanese language. But some of the communication tools which they utilize in the game, at least you should be very familiar with those things here. Maybe a communication is not done only by orally also. Sometimes they utilize the equipments also. So you have to be very thorough about the communication skill, like how to utilize a whistle, how to utilize the guns for starting purpose, or how to utilize flags or cards. So these are so many equipments are there in the sports field. So one must know how to utilize them for the communication purpose. Technological savior also very important. It is the face saver of an official here. It by taking the help of this technology, one can prevent a lot of errors and right decisions can be given by the official here. Player को टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करना है और इससे अपना जो डिसीजन एबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाता है. इधर उससे पहले टेक्नोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कब कहाँ पे कौन यूटिलाइज कर सकता है उसको समझना बहुत जरूरी है. You should have a knowledge about the technology use also here. Then you have to implement. Why you are going to implement? Why you are dependent? आपका जो ऑफिशिएंट होंगे वो और शॉर्ट करेगा. आपका जो गलती आप कर सकते हो वो सभी प्रिवेंट हो जाएगा. And next one is consent to an attire also. You particular attires are there, so you have to wear that one from wherever you are. So from which कहीं पे भी आप खड़े हो या बैठे हो, आपका आइडेंटिटी मालूम हो जाता. Uniform the one which helps in identifying yourself that you are an official here. आप सब कुछ है आपके पास, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है. अगर आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है
तो आप ग्राउंड में उतर भी नहीं सकते। देन क्यों? क्योंकि आपका आइडेंटिटी है वो, आप उसी से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, आप ऑफिशियल है बोल के। अगर आपके पास सही यूनिफॉर्म्स नहीं है तो आप ऑफिशियल बोल के आइडेंटिफाई नहीं होंगे उधर। इट इज a materialistic requirement which is there. These are the few points which is most important for the success of an officiating. And इसके साथ qualities भी बहुत important है। कैसा qualities होना चाहिए? Consistency, निरंतर उनका efforts होना चाहिए। आज सर्टिफिकेट ले लिया, आज ऑफिशियल बन गए, फिर बाद में 1 साल के बाद ही आप ऑफिशिएटिंग करेंगे, वैसा नहीं होगा। फिर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और गेम में एक बार जो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस शुरू कर रहे हैं, उसका कंसिस्टेंसी कंपटीशन खत्म होने तक रहना चाहिए। तो एग्जांपल ये बोल सकते हैं, जैसे आपको 100 आंसर पेपर दे दिया इवैल्यूएशन के लिए, तो पहला वाला तो बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत फ्रेश रहते हो, फिर बाद में धीरे धीरे कैजुअली आप करेक्शंस कर सकते हो उसको। तो इससे क्या होता है, उधर स्टूडेंट्स का लॉस हो सकता है। पहला अच्छा कर दिया, बाद में कैजुअली ले लिया आपने, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका जो इंटरेस्ट जो शुरू से है उसको एंड तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जजमेंट भी है आपको। मैं पहले भी बोला हूं, जजमेंट आप कभी भी ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स, ये दोनों में आपको सही सिलेक्शन करना है। दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिविटी। अगर प्लेयर्स को आप दे रहे हैं तो वो गलत है। आपको कभी भी आपके जो सब सिचुएशंस जो है उसको देके आपको जजमेंट देना है, और जजमेंट में भी कंसिस्टेंसी होना है। सुबह सुबह या कंपटीशन शुरू होगा तो तब बहुत अच्छा दे दिया, फिर बाद में आपने प्रेशर, आपके जो एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है, ऑडियंस का प्रेशर हो सकता है, प्लेयर्स का या कोचेस का, इससे क्या हो सकता है, आप फेवर भी कर सकते हैं, जजमेंट को कहीं देना थोड़ा कम कर सकते हो। इसलिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है जजमेंट देने के टाइम पे भी आपको। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज आल्सो हियर। आपको जब डिसीजंस लेना है तो यू शुड हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। Self confidence only comes when you are thorough with the rules and regulations, when you have a good experiences also. Without a good experience, without a thorough rules and regulations, then you may not have that self confidence. And regular implementation of rules and regulations during the competition is very important to gain a good self confidence and courage here. And he has to be very calm also here. कॉम किसके लिए चाहिए? वो अगर आपके सिचुएशन से, अगर जल्दबाजी में आप डिसीजंस ले तो नेचुरली वो गलत हो सकता है। अगर सही होना चाहिए तो आप कॉमनेस मेंटेन करना है, आपको कॉमनेस होना चाहिए, शांत होना है, तभी आप सही डिसीजंस, गलत क्या है सही क्या है इसको आप मेजर कर सकते हो। अगर आप कॉम नहीं है तो, शांत नहीं है तो आप मेजर करना मुश्किल है। इससे आप बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकते हैं। और fairness is also very important. I have said that maintain a neutrality here, give a priority for the objectivity, not for the subjectivity here. आप किसी को फेवर नहीं करना चाहिए, because they considered you are as an equal to a god or a judge here. During his decision is the final, so you should not be biased. And politeness is also very important here. यहाँ by chance player का गलती हो सकता है, इसको आप जब डिसीजंस देते हो मेंटेन द पोलाइटनेस आल्सो हियर। आप बहुत विनम्र से उनसे बात कीजिए और आपका डिसीजंस भी उनको सुनाइए। पोलाइटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आपका डिसीजन जब देते हो उससे उसका परफॉर्मेंस कम नहीं होना चाहिए और हर्ट भी नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या हो सकता है, उसका परफॉर्मेंस भी कम हो सकता है। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ही मे नॉट गेट इफ ऑफिशियल्स आर नॉट गिविंग देयर डिसीजंस पोलाइटली। एंड प्रोफेशनलिज्म आल्सो, कहीं पे भी हो आप, whether inside the ground or outside the ground, be a professional here.
That is very important here. बाहर एक ओपिनियन और अंदर एक ओपिनियन वो नहीं होना चाहिए कभी भी players. And emotional intelligence is also very important here. For an official to take a right decisions, he should be more intelligent. Emotionally, he should be very strong also here. He should not come under the control of an audience here or under the control of any superior authorities while giving a decision. So emotionally intelligent will be able to solve the problems of an air players instantly. Within on the ground itself, he can solve the problems. No need to wait if he is emotionally intelligent. And appearance also, appearance, he should look like a fit personality here. Means he should be very fit, like a proper human being appearance, like a very fit, smart person, a person with a big belly, or a person who is injured, who cannot run, then it definitely affects the officiating abilities also. Here appearance is also very important here. Attire and personal equipments, when he enters on the inside the ground or any officiating areas, attires and personal equipments are very important. What is required for the game, all those things he must carry, especially you may say a small cards for the signal purpose, flags, or shoes, equipments, proper attires, whistle, or any communication equipments, maybe wireless phones. He must carry all those things. So that is very helpful, and that is the quality of an officials. And pose and attitude, how he gives an decision, that is also very important here. So a small change may change the opinion of the official. So exactly means he has to pose, means like when you're in a volleyball, when a ball goes out, you should give a right signal here with both hands here. Or when he shows in a direction, even his posture should be should be right also. Absolutely, he should raise the hands up to a 90-degree angle from his shoulders. So that is very important here. So the signals while giving, he should give it in a right manner as per the rules and regulations here. And one trainer or an official should be a trainer, as well as he should be a certified person. One more point I want to add is that experiences. Constantly he should gain in a good experiences. These are the few qualities here. And responsibilities. हर एक officials का responsibilities रहता है. ये responsibilities जो है, you can divide it into three here. One is pre-game, during, as well as after the game. हम जो responsibilities इसको हम तीन इसमें डिवाइड कर सकते हैं. एक तो गेम से पहले है, और गेम शुरू होने के बाद भी है, और गेम जब कंप्लीट होगा उसके बाद भी ऑफिशियल्स का रिस्पांसिबिलिटीज रहता है. ये मतलब नहीं बस ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन ओनली ही विल हैव अ रिस्पांसिबिलिटी. ही हैज एन रिस्पांसिबिलिटी pre, during, and after. Let us understand these responsibilities here. Pre-game responsibilities are there. Know the manual here. जब भी player officials competitions के लिए आते हैं officiating के लिए, उनको एक half an hour या 1 hour पहले आना है. तो आने के बाद कांस्टेंट जो मैनुअल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को उनको सही तरीके से और एक बार पढ़ना है. जो भी नया टॉपिक्स है उनको फ्रीक्वेंटली कवर भी करना है, और रिव्यू एज पार्ट ऑफ योर प्री गेम कॉन्फ्रेंसेस आल्सो. बाय चांस कहीं कॉन्फ्रेंसेस है तो आप वहां पे भी आप अटेंड करो. नया रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द प्लेस वेयर यू मे लर्न द रूल्स एंड रेगुलेशंस. मे बी not only a conference, it may be a meeting, or it may be a workshops which is organized by this federation. So you should attend all those
meetings and conferences and try to gain a present knowledge. This is also a part of a pre-game duty here. Updating yourself with this knowledge is very important here. And arrive on time. Yes, arrive on time. It is not like exactly at that time only. It is so before the competition, half an hour before. That is very helpful, because when you arrive there, you'll be able to communicate with your superior authorities or with your subordinates. Rules and regulations, present knowledge can be shared before the competitions, which you are going to implement during the competitions here. And इवन आप क्या पहले जब आते हो तो इमीडिएटली आपको जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दो which are supporting you should check all those things, whether the battery backup is okay or what, सही से वो इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स काम कर रहे हैं क्या, ये आपको एक ट्रायल के हिसाब से आपको पूरा चेक करना पड़ेगा. जो भी इक्विपमेंट्स आप यूटिलाइज करते हो कॉम्पिटिशन्स के लिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, हर एक चीज है क्या उधर, हर एक चीज सही जगह पे है क्या, सही जगह पे वो ऑपरेट हो रहे हैं क्या. यू हैव टू do all those things. That is the important part of an official. This is also a pre-game responsibilities here. Next is concern with a score sheets also. ये बहुत important है score sheets. बिना score sheets आप किसी को किसी स्कोर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप. Finally this score sheet will act like a report also here. So you all the requirements you have to carry it, like especially the scores, blank score sheets you must carry here. So and you must be very thorough with what all things you have to fill here. Whether any term is confusing in that official score sheet, means if it is confusing, then you clarify it with your superior authorities what is the exact meaning of that particular term which is there in the score sheet. Okay, these are the few important pre-game responsibilities of an official here. Next, during the game here, a small incidents you can see here. Then what sort of behaviors will be there. This is small example here. So you cannot expect every a player in a same as it is. So many players are very intelligent also, very smart. They are very good in manipulating the rules and regulations, and behavior wise, attitude wise, absolutely it is different here. During this time only, it is the major role of, there is a major role of an official here. So you can see a small video here. You know what makes me really sad? Just a minute. This is Indian business directly owners online. are stuck.
Student, you participants, you can see this one video. इधर कैसा है कि वो रूल्स को मैनिपुलेट करने के लिए या जीतने के लिए प्लेयर्स बहुत सारे टैक्टिक्स यूज करते हैं, बहुत चालाक रहते हैं. तो आपको बीइंग एन ऑफिशियल आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए और रियली सही है या गलत है. ओनली you can judge all those things with your good experiences here. So in different impartial, so आप ये जगह पे आपको वही बोला मैं, give priority for the objectivity, not for the subject here, and don't be biased at this place, and be impartial also. Maintain a good wide field of a vision. आप जो भी situations हो रहा है आपके नजर के सामने होना चाहिए, वो आप वैसे जगह पे आपको खड़ा होना चाहिए. आपका पोजीशंस बहुत अच्छा होना चाहिए जहां से आप सभी को देख सकते हैं, हर एक सिचुएशन, हर एक एंगल को दे सकते हैं. वैसे सिचुएशंस को आप बहुत इजीली आप टैकल कर सकते हैं अगर आप पास में है तो. रीड गेम सिचुएशंस, व्हाट डन इज इट, हाउ मच टाइम इज on the clock, adjust to the situations, and alertness. ये 4 point is very important. 4 points are very important here. Like you have to be more alert, adjust for the situations here, and you have to shift from one place to another place as per the requirement of the game here, and give priority for the time also, and what done is it, whether things which you have given that is right or what. Site analysis is also very important about these situations before giving a decisions. That is very important here. And protection from injuries, you first of all you should be free from the injuries, away from the injuries, as well as try to avoid all those situations which may create an injury for the players also here. Participation is very important here compared to winning here. So competition is played not to get an injury here. So you make sure that all the players are protected. Try to implement the rules and regulations in time. If you are implementing, naturally most of injuries can be prevented here. And uniformity in decisions. Before also in the second slide I have said that uniformity in decisions. Don't give the decisions by seeing the players. आप players को मत देखिए जब decisions देते हो, उनका actions के ऊपर आपको decisions लेना है, not on the basis of by seeing a players. Maybe उसका performance last time अच्छा होगा, इस time अच्छा नहीं हो सकता, तो इसलिए आप कभी भी player या audience को देख के आप decision मत लो, और ऑडियंस के जो प्रेशर, अंडर प्रेशर मत हो. अगर आप एक बार ऑडियंस के प्रेशर में आ गए तो देन योर डिसीजंस विल बी रॉन्ग एंड you may not able to maintain the uniformity of the decisions also here. And one more thing, and when the competition starts, that's why you may give a good decisions, but as long at the end of a competition, you because of a greater energy loss, you may give a wrong decisions, or you may not able to maintain the uniformity here. So to maintain the uniformity, आपको बहुत फिजिकली फिट भी होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी आप थरो होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी भी आपके साथ होना चाहिए, तभी आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकते हैं. अनइंटरप्रेटेड फ्री फ्लो ऑफ गेम, खामखा आप विजल है आपके साथ, आपका पास पावर है बोल के आप जब चाहे आप गेम को रोक नहीं सकते. आप कभी रोकिए भी नहीं वो गेम को चलने दीजिए, और कभी भी जब जरूरत पड़े तभी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कीजिए. खामखा आप विजल यूज किया तो क्या होता, तो गेम इंटरप्ट हो सकता है और परफॉर्मेंस में भी बहुत डिफरेंस आ सकता है. दैट कैन बी अ रीजन फॉर द लॉस ऑफ एन गेम आल्सो. सो यू डोंट इंटरप्ट ड्यूरिंग द गेम अननेसेसरली. ओनली when things are required you have to interrupt. And conscious about a potential players also here. And जो players का potentialities है उसको आप utilize करने के लिए दीजिए. आप आपके rules and regulations, आपका behave के वजह से
उनका जो potentialities वो snub होना नहीं चाहिए. You should give an exposure for the players to show their abilities, potentialities. Whistle when you are sure. Unnecessarily don't whistle it. When you are sure, then only try to whistle it. And field movements are very important. Language, body language is also very important. I said that where situations are occurring, you have to be there. So you have to move all over the field. You have to move and you have to be at your places only. Use a proper body languages that should not hurt anyone also here. Politeness is also important part during the game while you take an decisions here. These are the few important points which you have to keep in your mind during the game with us. Next, technology to assist. Before, there were no technologies. Lot of human errors were there, and even some of the officials misutilized their responsibilities here. But now, all over the world, technology is supporting us. So, in a matter of a second, exact things can be seen again. Things can be reviewed again and again here. So, technology is the one which is very helpfully helping all the people here, including officials, even audience. Audience will be able to see the situations again and again. Reviews can be done here, and even for official, it will be very helpful to give a proper decisions also here. तो इसमें officials जो है उनको टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो गेम में यूटिलाइज कर सकते हैं. जब भी मैं बोला था, जब प्लेयर एंटर करते हैं, ऑफिशियल्स एंटर करते हैं, तो ऑफिशियल्स के पास हर एक चीज इक्विपमेंट्स होना चाहिए जो कॉम्पिटिशन्स में यूटिलाइज कर सकते हैं. मे बी कंप्यूटर हो सकता है, या स्टॉप वॉचेस हो सकता है, विजल हो सकता है, या उनका यूनिफॉर्म्स हो सकता है, या क्या बोलते मोबाइल्स या loudspeakers, whatever it is, they should have all those things. Even those equipment should be in a good condition also. This really helps the people to overcome lot of errors. आजकल बहुत सारे equipments भी आ रहे हैं, जैसे technology to assist here. Hawkeyes is there, video referees are there, IRS, COS, instant replay and control systems are there. Photo finish, especially you need in athletics. Without photo finish, it's very difficult. Even in the swimming, it may be, or in athletics, especially photo finishes are very important here. Sneakometers are there, UDRS, umpire decision review systems are there. Then electronic line judging tools are there, especially badminton, or it may be a lawn tennis. Here they are utilizing these equipments here. Goal line technologies and RFID, radio frequency identification, especially in cricket they use it. Even some of the this RFID are utilized in athletics also, especially for marathon runners. They have to run 42 kilometers, then it's very difficult to keep on tracking these athletes. So to track these athletes, nowadays federations are using this beautiful chips, so that helps in tracking the players and tracking the position of the equipments also. Even in the football also, in the ball also, placement of cameras and placement of chips can be identified there. Next, after the game, what sort of responsibilities will be there here? As an official, he should congratulate the winners, and he should give best wishes for the losers also here. And signature on score sheets, he has to sign on all the score sheets and try to have a duplicate a copy with him, so that it may help the officials
while dealing or while protecting the players during the time of anti-doping process also. So the copies which is there, that the copies must help the other authorities in case any requirement is there. Then official should be ready with his documents also, reports. Then probably that will be very helpful for the federations or for any officials who is dealing with the players after the game also. Next, ethical decisions also here. Being an official, ethics are very important. Even ethics are not only meant for players. Even these ethics are there for the officials also. Like, ask yourself what the dilemma is and get the facts here. Try not to be in dilemma, and to maintain the ethics, you please come over from the dilemma. That is very important. Confusion mat hona, दो विचार के मत होना. कभी भी officials एक ही विचार रखो. कभी confusion में हो तो you will be not able to take any right decisions also. Consider the most important things you need to recognize in yourself. Try to recognize your qualities first here. If any scarcity is there, try to change it, which may helpful for the maintenance of ethical aspects during the game, as well as yours also it is. So try to recognize what sort of qualities are there and try to improve or develop a good qualities. Then it is time to judge your options and make a decisions. Commit to actions here. Your commitment is also very important here, and commitment towards your decisions also. When you have taken a decision, then you are the responsible. You should take the responsibility of that decision. You cannot deny it. So that is a part of an ethics here. And practical tips for effective and successful officiating. आपको अगर बहुत अच्छा ऑफिशियल बनना है, कुछ चीजें जो ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे है. Communicate with participants and coaches here. How you should communicate, कैसा आपको communicate करना. गेम मतलब बस कोचेस नहीं रहते या प्लेयर्स नहीं रहते, उनका कोलिग्स भी रहते हैं, वॉलंटियर्स भी रहते हैं, और गार्डियंस भी रहते हैं, फेडरेशंस भी रहता है, और साथ में ऑडियंस भी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं. सो बीइंग ए ऑफिशियल यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट विद देम हियर. स्पेक्टेटर्स स्पेशली क्या क्या मीन्स आप यूटिलाइज कर सकते हो एक प्लेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. ऐसा जैसे वॉइस इज द फर्स्ट मीन्स to communicate, or if players are very far, you may utilize visuals, and if language is not known, then use indicators or body languages. Through this, you will be able and you will be very comfortable in communicating with the players here. Voice, visual indicators, as well as body languages. Essential points, what you have to keep in your mind is that your voice should be very clear. आपका जो वॉइस यूज कर सकते हो प्लेयर के साथ बात करने के लिए, दैट शुड बी वेरी क्लियर हियर. बहुत अच्छा होना चाहिए. अप्रोप्रिएट चूजन वर्ड्स, सही शब्द यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. शब्द जो है दैट शुड बी वेरी फेमिलियर फॉर द प्लेयर आल्सो, not only for an official. So try to utilize those words which is very familiar for the player and familiar for the game. A firm manner. When you take a decision, your decision should be in a firm manner. Means सही और दृढ़ बोलते हैं, जो hard strong decisions होना चाहिए. Firm manner. उसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए. Looking at the person. कभी भी decisions लेते हो, प्लेयर को देख के आप डिसीजंस लेना चाहिए. मतलब जो बोलना चाहते हो प्लेयर के देख के आप बोलना है. ऐसी जहां दूसरे जगह पे खड़ा हो के आप डिसीजंस नहीं बोल सकते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा किसको डिसीजंस दिया. इसलिए आप पहले प्लेयर को आइडेंटिफाई करें, फिर बाद में आपका डिसीजंस बोले.
नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज अंडर स्क्रूटनी। पहले तो नहीं होता था, जो डिसीजंस होता था बहुत कंफ्यूजन में भी होता था, बहुत सारे मिस्टेक्स भी आते थे, बट आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, इससे आपको डिसीजंस लेने में बहुत हेल्पफुल भी रहेगा, इसलिए आप टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना है और ये जरूरी भी है। ऑब्जर्व कीनली, जैसे कंप्यूटर्स ऑब्जर्व करते हैं, इवन आपका भी कैपेबिलिटीज एटलीस्ट इक्वल होना है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट शुड बी इक्वल, एटलीस्ट क्लोजर बाय योर ऑब्जर्वेशन शुड बी देयर लाइक एन टेक्नोलॉजी है। यूज एक्सपीरियंसेस, आपका एक्सपीरियंसेस को आप बहुत अच्छा यूटिलाइज करो डिसीजंस लेने से पहले। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्मिनोलॉजी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में है उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज करो जब डिसीजंस देने के टाइम पे। मास्टरी ओवर सिग्नल्स, आप सही मास्टरी करना चाहिए, नहीं तो 90 डिग्री आप अगर आप शोल्डर्स उठा रहे हैं, तो अगर 45 डिग्री शोल्डर्स उठाए तो रूल्स अलग अलग हो सकता है। 45 डिग्रीज के लिए अलग रूल और 90 डिग्रीज के लिए अलग रूल। इट इज देयर इन जूडो आल्सो। 90 डिग्री इट इज what do you call Vazari, and 180 degree absolutely it is Ippon here. 45 degree before it was Yuko, like now it is not there. So means if you change the angle or change the signal posture, then rules or interpretations may go wrong here. So a proper signal mastery over the signal is very important. Clarity about the nature of sports, गेम कैसा है आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, कौन कब डिफेंस होता है, कब अटैक होता है, किस टाइम पे होता है, कौन कर सकता है, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नेट बॉल इज देयर और a basketball, even though these games are very similar, but still lot of rules and regulations are different here. Rhythm and tempo is also very important. Anticipation, next situations क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, क्या हो सकता है, you have to be very alert in this. Anticipating is very important here. A logical anticipation is also very important here. इससे क्या होता है, बहुत सारे इंजुरीज भी प्रिवेंट कर सकते हैं और आप सही सिचुएशन पे रह सकते हैं और सही डिसीजंस भी ले सकते हैं। और प्रॉक्सिमिटी, हर एक सिचुएशन के पास आप बहुत क्लोज रहो, तभी आपको डिसीजंस लेने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाहर दूर है तो आप कंफ्यूजन में रह सकते हो। फोकस टुवर्ड्स द पर्टिकुलर सिचुएशन, डाइवर्ट मत करो। बहुत सारी चीजें हैं जो कंपटीशन में डाइवर्ट कर सकते हैं आपको, मे बी कोच डाइवर्ट कर सकते हैं या ऑडियंस डाइवर्ट कर सकते हैं, स्पेशली द ऑडियंस प्रेशर में डाइवर्ट यू हियर एंड देयर, बट आपको ये देखना है, आपको उधर ही फोकस करना है सिचुएशंस के ऊपर। सो दैट कीप योर बॉडी, माइंड एंड फिट, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फोकस बेटर। नेक्स्ट, नीड टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स हियर। दो पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले ही उसको स्टॉप कर दो, या बाई चांस फिर भी शुरू हो गया उसको सेटलमेंट करो। These are two importance which you have to be careful while dealing the conflicts. Reducing the conflicts is very very important here. उसको अगर प्रायोरिटी दिया तो सेटलमेंट का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या देखना है, आप एज ए प्लेयर, सॉरी एज ए ऑफिशियल, आपको मेंटल स्टेट को बहुत अच्छा रखना है। मेंटल स्टेट मींस कूल एंड कॉम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमली बिहेवियर, सही टाइम पे आपको बिहेव करना है और रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते हर एक चीजें बहुत सॉफ्टली चल जाएगा, नहीं, आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस पे के लिए रेडी रखना चाहिए। कभी भी आप लेथार्जिक, केयरलेसनेस होना चाहिए। डोंट इग्नोर एनीथिंग। एंड नेक्स्ट वन इज इग्नोरिंग क्रिटिसिज्म। आपके ऊपर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आपका डिसीजन सही नहीं है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, फिर भी आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल एंड रियलाबिलिटी, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। कहीं कभी कभी ऑफिशियल्स और प्लेयर्स या ऑडियंस आपको स्टिमुलेट कर सकते हैं। आपको स्टिमुलेट क्यों करेंगे वो? क्योंकि आपसे गलती हो बोल के।
तो इसलिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। फिर भी एक बार आपसे गलती हो सकता है, तो तब आप क्या कर सकते हो, हायर अथॉरिटी से आप अप्रोच करके एक डिसीजंस ले सकते हो। ये भी एक पॉइंट है। हर एक टाइम पे आप पूरा डिसीजंस नहीं ले सकते। उस टाइम पे यू मे टेक द हेल्प ऑफ एन अदर सबऑर्डिनेट्स और यू मे टेक द सपोर्ट ऑफ एन अदर superior persons. Settlement of conflict also. Next is inquiry from all corners. Decisions लेने से पहले आपको हर एक एंगल से, हर एक से आपको मशवरा भी करना है, इंक्वायरी करना है, और साथ में प्रॉपर लैंग्वेजेस को यूज करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेजेस, both things you have to check it, what sort of it is. हर एक माइन्यूट थिंग्स पे भी आपको ऑब्जर्व करना है, बाद में आप डिसीजंस ले सकते हैं। A practical level, try not to be at an imaginative levels, try to be a practical one. आपको जो दिखता है उसके ऊपर, कोई assumptions के ऊपर आप डिसीजंस मत लेना कभी भी। जो भी बोल देते हैं तो उसके ऊपर डिसीजंस नहीं, आप खुद जाके वो सिचुएशंस को ऑब्जर्व करो, बाद में आप डिसीजंस ले सकते हो। These are the few points which you have to keep in your mind to manage the conflicts, reducing conflicts and settlement of conflicts. Next is written reports are very important here. कभी भी कंपटीशन टाइम होने के बाद प्लेयर्स तो स्टॉप कर देंगे, पर फाइनली एक कंपटीशन कंप्लीट होने के लिए ऑफिशियल्स का रिटर्न रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है। Without a written report, competition will not complete. Competition completes only after the written report of an officials here. It may be a score sheet also. So that is very important here. And while giving a report, few points you have to keep in your mind is that honesty and respectful, trustworthy, and integrity in report delivery. These 4 points you have to keep in your mind while giving a written report. Don't be biased here. While try to be neutral and try to be honest while writing a report here. Next, behavioral aspects are here. To be an official, certain behaviors are very important here. How you have to behave during the competition, after the competitions, before the competitions. That is very important. Be impartial. किसी को फेवर मत करो. Be consistent, objective, and counterish when making a decision. Try to give importance for the objective. Situations को आप priority दो, but not for the subjects here. Avoid any situations which may be perceived as a conflict of interest. आप being a officials, हर एक situations को आप avoid करो जो conflict के लिए एक cause बन सकता है. Means to prevent the conflicts, try to take decisions or avoid the situations which may promote for the conflicts here. Then accept responsibilities of all the actions taken. मैं पहले भी बोला था, जो भी आप decisions लेते हो तो you are the person responsible for that. You should accept it. That is very important part of an official. After taking the decisions, you cannot say no for that. You are the responsible person for that because you have taken a decision and the responsibility is given for you to take a decision. So you are the one, you should accept it. Condemn unsupporting behaviors and promote respect for all the competitors. आपको जो भी अनवांटेड अनस्पोर्टिव बिहेवियर्स जो है आप उसको कंडम करना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए कभी भी. And emphasize the spirit of competition rather than the errors here. आपको पूरे competitions में आप you should give priority for the spirit of a competition, not for the errors. गलती के लिए priority नहीं देना चाहिए. पूरा competition का जो पर्पस है, स्पिरिट है, उसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए.
बल्कि उसका जो गलती है उसके ऊपर नहीं. ह्यूमंस है, गलती हो जाता, नॉट ऑन द बेस ऑफ इंटेंशन. अगर इंटेंशन है तो देन यू हैव टू टेक एन राइट सिवियर एक्शंस आल्सो. यू कैन नॉट डिनाई इट. आपको इंटेंशनली गलती कर रहे हैं तो आपको एक्शन लेना है. अगर बाई चांस एरर हो रहा, देन you should consider it and you should take it in a spirit of the competitions. Ensure that your behaviors and comments are always positive here. जो भी आप comments करते हो on the field or off the field, that should be positive one. That should promote the losers also. That is very important here. Keep up to a date with the latest trends in officiating and principles of growth and development of your end. So आपका जो ऑफिशिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरे स्पोर्ट्स फैमिलीज, स्पोर्ट्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर जाना चाहिए. वट एवर डिसीजंस यू आर टेकिंग, दैट शुड बी ऑन द बेस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हियर. आपका जो डिसीजंस है, किसी प्लेयर का डेवलपमेंट होना चाहिए और उसका ग्रोथ भी होना चाहिए. आपका डिसीजंस वैसे ही होना चाहिए. यू शुड फॉलो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स हियर. एंड वेलफेयर ऑफ एन एथलीट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस हियर. नेक्स्ट इज concerned with a summary here. So possesses right skills and attitude to perform pre-game, during games and post games responsibilities. We have discussed on this point. So ये जो presentations में हमने ज्यादातर priority official का जो responsibilities है उसके ऊपर बात किया है. Acts like a neutral person here. फिर players officials कैसा होना है players के साथ, उसके बारे में बात किया. Especially one point is neutrality. Neutral person he should be. And next one is communicates effective and objectivity. क्या क्या equipments है, कैसा हम players के साथ, coaches के साथ और federations के साथ कैसा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशंस, उसके बारे में भी बोला. क्या क्या इक्विपमेंट्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स के बारे में भी बोला कि कैसे यूटिलाइज करें उसको. हैज एबिलिटी टू टेक अ डिसीजन अंडर प्रेशर, और इसके साथ कोचेस का एबिलिटीज के भी बारे में और सक्सेसफुल ऑफिशियल्स का क्वालिटीज के बारे में भी बात किया था इधर. एंड manages conflicts well here. Conflicts जब होगा या होने से पहले ऑफिशियल का जो एक्शंस क्या है, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी बात किया था here. And ethics, fair and upright and tactful के बारे में, मतलब गेम्स में एक वीडियो भी दिखाया था कि प्लेयर्स का जो एटीट्यूड्स रहता, बिहेवियर्स रहता है या वो थोड़ा अलग ही रहता है. तो वो पर्पस उनका जीतने का रहता है, पर ड्यूरिंग दैट दे मे यूटिलाइज और दे मे एक्ट आल्सो हियर, और दे मे मैनिपुलेट द रूल्स एंड रेगुलेशन. इस टाइम पे आपको बीइंग ए प्लेयर, बीइंग ए ऑफिशियल्स, आपका एथिक्स कैसा होना चाहिए और इन टाइम डिसीजंस आप कैसा ले सकते हैं, इसके बारे में भी बात किया था. फर्दर thanks, I want to tell thanks for the privilege which is provided for me through this E-Pathshala. Over to Narendra Gangwa sir. If any questions are there, please from the participants you may ask it. Hello. Yeah, thank you so much, sir, for a wonderful session and sharing a huge knowledge with the Shall I participants. stop sharing, sir? Yeah, please. Yeah, thank you, sir. So now we will take few questions from the participant side. सर एक क्वेश्चन है, हिंदी में है, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं मंजीत लाहा.
अच्छे ऑफिशियल में क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए? जो एबिलिटीज अभी एक स्लाइड में भी दिखाया था मैं. So orally, what I can say is that a right personality, physically, mentally, socially, spiritually sound person, thorough with rules and regulations, and he should be more effective while implementing the rules and regulations. Overall, I can say this much only. Sir, few of the participants, they want to know how they can get latest rule books. Rule books, especially it is not at one place. It is हर एक जो फेडरेशंस हैं वो लोग अपना अपना वेबसाइट्स में रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं. आपको कौन सा गेम का रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, आपको पर्टिकुलर फेडरेशन का वेबसाइट्स में ब्राउज करके आप वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रोक्योर कर सकते हैं. तो ये बात नहीं कि हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बुक में रहेगा, क्योंकि हर एक दिन रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होता रहेगा. इसलिए आपको जो फेडरेशंस का जो वेबसाइट्स है और फेडरेशंस का जो कॉन्फ्रेंसेस जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट भी हो जाएगा और आप थरो भी रहेंगे उसके ऊपर. एक जगह पे नहीं मिल सकता, पर एक जगह कुछ चीजें मिल सकता है. वो तो ओलंपिक जो एसोसिएशन है इंटर IOC, तो वहां पे आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छा मिल जाएगा. फिर भी आपको वेबसाइट में आपको ब्राउज करना ही पड़ेगा. Yes, sir. With the permission, they can download from there all the governing bodies, जो associations होता है, national bodies हैं, उनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. Yes. Yes. Sir, next question is, sir, रूरल एरियाज में बच्चों को रूल्स का उतना एजुकेशन नहीं दिया जाता है, तो वहाँ उस लेवल पे जब कंपटीशन कराने जाते हैं तो अब हमारे क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट से, वहाँ पे मैचेस को, गेम्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज प्लेयर्स आर नॉट एजुकेटेड. तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ऑफिशियल? सर, वन थिंग इज दैट whole rules and regulations we cannot teach for the students. बेसिक जो है रूल्स उसको टीच कर सकते हैं रूरल लेवल पे. और being a officials you have to be very flexible within a good consent. You can organize these sports and competitions. क्या ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनका एज भी वैसा रहता, समझ में नहीं आता. इसलिए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रखना है. जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं उसको हम यूटिलाइज इम्प्लीमेंट करना है. और वो इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या है, सभी ऑफिशियल्स का एक कंसेंट लेना होता है. अगर कंसेंट नहीं है तो क्या होता, जब रूल्स शुरू हो जाता है गेम, फिर झगड़ा शुरू हो जाता कोचेस के बीच में, ऑफिशियल्स के बीच में कि आपने ये रूल्स को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया बोल के. इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करने से पहले एक ऑफिशियल मीटिंग में सभी का कंसेंट ले लिया तो आपको जो रूल्स अप्लाई करना है या जो रूल्स को अप्लाई नहीं करना है, कहाँ पे फ्लेक्सिबल देना है, तो वो अगर क्लियर है तो कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं आएगा और कॉम्पिटिशन्स को भी बहुत सा इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द ऑडियंस, नॉट फॉर द ऑफिशियल्स हियर. तो आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं. मत स्ट्रिक्टली अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सारे मिस्टेक्स भी आ सकते हैं बच्चों से, तो नो. थैंक यू सर. सर, हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं अतुल यादव, उनका क्वेश्चन है कि ऑफिशियल किस बात पर ज्यादा ध्यान दे कि गलतियां कम हो विजिटिंग करते टाइम पे? गलतियां बहुत सारे एंगल्स में गलतियां हो सकता है, इसलिए ध्यान देना चाहिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर. और प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजेंस ऑफ फिजिकली इट इज नॉट सफिशिएंट. प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग द कंपटीशन, सिचुएशंस के पास आपको रहना है और सही रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप इम्प्लीमेंट करना है विथ एक्सपीरियंस. अगर आप ये पार्ट को आप थोड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो आपका बहुत सारे एरर्स
कम हो जाएगा। आप कहीं दूर रह के इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं होगा। पहले बोल रहा हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको थरो आना चाहिए और इम्प्लीमेंट करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में सिचुएशन कहाँ पे है वहां पे होना चाहिए, फिजिकली और मेंटली होना चाहिए। नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली आपको रहना है इन टाइम। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, then there will be no problem at all. Thank you so much, sir. The next participant is Neha Bhagat. She wants to know, I have thinking, how can an official tackle a sports person who is having more aggression in terms of attitude? It is experience it. Official कुछ नहीं कर सकते, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब स्ट्रिक्टली अगर इंप्लीमेंट कर रहे हो, मे बी व्हेन ही कम्स टू नो दैट रेड कार्ड इज गिवन फॉर मी इमीडिएटली विदाउट कॉम्प्रोमाइज, देन नेचुरली ही मे चेंज हिज बिहेवियर। एंड कंसर्न टू चेंजेस इन द बिहेवियर, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन ऑडियंस और एन कोच हियर। कोच को उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में समझाना चाहिए, और he may approach the psychologist to control his aggressions. When it comes to on the field as an official, then he should implement the rules and regulations very strongly. Then what happens, he'll be even players will be able to understand that there is no value for the aggression of his. Aggression really damages his own performance. When he understands that one, then player may control his behaviors and he will act according to the requirement of a game, not according to his personal interest. So आपको rules and regulations सही implement in time करना चाहिए, समझाना चाहिए। और एक Thank you, sir. Sir, one more question is there from our participant Chandan Kumar Roy. So if any official commit mistake in taking right decision, so like if association asks them to not to continue with that, in those situations, what should done? मतलब you are saying that federation is allowing him to discontinue from the officiating. Yeah, because of some unknowingly some wrong decisions. Yeah, see here, I know that when these sort of situations arises, so you should not, first of all, is that you should not allow that situation to occur. So that before taking a decisions, if you are very serious and with all your experiences, or with all rules and regulations, with presence of mind, if you are taken a decision, definitely that may not occur here. Or even though afterwards, to prevent it, first of all, I am giving priority for the prevention only here. If it has happened because of his own intentions, if you want to create a favorism, then there is no option, he has to quit that one, because federation has their own rules and regulations, so they cannot compromise to maintain that quality of an officiating. So the harsh decisions might be taken by them also, so we cannot stop that one. So prevention is better than the cure here. गलती मत करो, कितना हो सकता है उतना प्रिवेंट करो। अगर छोटे मोटे हैं तो you may ask or you may request them in the future that he may correct, or after some punishments he may come back also. One option है, जैसे थोड़ा बहुत punishment के बाद या further courses के बाद, 2-3 कोर्स अपग्रेड होने के बाद उनको बुला सकते हैं फिर से, instead of taking a harsh decision. It is up to a federation, it is. पर पहले मेरा सजेशन है, आप intentionally गलती मत करो और presence of mind में आप decisions लो. That is very important to prevent the mistakes. Yeah, thank you so much, sir. The next question is from our participant Syam Kumar. He is from Nalanda. Sir, एक अच्छा ऑफिशियल के क्या-क्या गुण होने चाहिए? Means I think he's asking about the quality. Yeah, before also I have said this one, slide number 3 or 4, I think.
ओवरऑल में ये सेकेंड टाइम आया क्वेश्चन, फिर भी मैं बोल लेता हूँ. In general, what is required is right personality is required. Personality right means absolutely human qualities are required here. One thing, he should be updated with all rules and regulations. He should have an experience of implementing those things and physically, mentally fit while implementing the rules and regulations at that particular situations. Past में हो के अगर वो कर रहे हैं, I feel that is the quality. And other qualities, I have said that human qualities, I have said in that every qualities are included here. That should be there for every officials, not only for a normal human being. It should be for every official also. Thank you, sir. The next question is, sir, what are the qualification like to become official? How they can get the qualification? When it comes to certificate, then they need to approach the federation. They have a different sort of eligibilities, like he should be a player or a participation in national or international levels. These sort of qualifications will be there for them as a norm. So they have to fulfill all those things here. But when it comes to a general qualities like a personality, have said, a physically, mentally fit person, the person who's having a presence of mind, and the person who is having a good experience about the game, he can be a good official also with a recognitions, a recognition which is given by the federation. So these are the few requirements are there to be an official here. Okay, sir. Some of the participants, that very common question is there, like how they can collaborate with the associations to conduct tournament and to get officiating exposures. So that some idea from your end, sir. सर ये तो जैसे कोलैबोरेट कैसे करें बोले तो ये तो पहले फेडरेशंस के साथ अटैच होना है. पहले तो आपको मालूम है तालुक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से एसोसिएशंस रहता है, तालुक डिस्ट्रिक्ट्स में एफिलिएटेड रहता है, और बाद में डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से नेशनल फेडरेशंस है, बाद में इंटरनेशनल फेडरेशंस है. आपको जो रिक्वायरमेंट है अगर आप वो फुलफिल कर रहे हैं, देन you can collaborate with them. First of all is that you should be a player, you should be a part of that executive member associations, then you can collaborate with them for many more things here. आपको first of all आपको वो जो प्लेयर होना है, साथ में कहीं ना कहीं आप जुड़े रहना है, तभी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं. Okay, sir. Thank you so much for delivering such a wonderful session. And we have few more questions from the participant. We'll definitely reply to them. And now it's my duty to propose vote of thanks to you, because as we can see in the chat box, the responses from the participant, it's very positive and it's very, fruitful responses from them. So thank you so much, sir. On behalf of Ministry of Education, on behalf of Ministry of Sports, Youth Affairs, and Sport Authority of India, Hello India, and on behalf of entire team of Sai LNCP and Principal Dr. G. Kishore, sir, I would extend my heartiest thanks to you for joining session and delivering such a wonderful talk. Thank you so much, Dr. Sanjeev S. Patil, sir. Thank you, sir. It's a great privilege for me. Even by heart, I thank Sai LNCP, Pathshala, and our respected principal, sir, for providing this beautiful opportunity to in this session as a resource person, sir. Thank you very much. Yeah, thank you. And I would extend my thanks to all the participants for joining this session, and definitely it is going to help you all. Thank you, participants. We'll have another session of the day in afternoon 3 to 4:30 p.m. And I'm sure that you all going to join that session. And the topic going to be delivered by Dr. Sudhi CS, Assistant Professor, Sai LNCP Trivandrum,
He will be talking on the topic working with others, right? So that is going to be a very important topic because we have to work in team, we have to be with the other colleagues, right? So that is going to be a very beneficial topic for you all. Please take note. So thank you once again, and the poll has been launched. Please take part in that and provide your valuable feedback about the session so that we can be better in the future. Thank you, everyone. We'll see you in the next session. Thank you. Thank you, Patil sir, once again. Thank you, sir.